Yes, so we were discussing functions from Rn to Rm, and we were talking about the differentiability of these functions. So, in fact, we are dealing with functions from Rn to Rm where n and m are positive integer greater or equal to 1. For these functions, we observed that f has components, say f1x, f2x, and so on. It has m components. In short, we also write this thing as f equal to f1, f2, fm. Here, each fi, where I is between 1 and m, is a function. It's a function from is a function from Rn to R. And we have seen that this fi is actually the composite function xi composition f, where xi's are coordinate functions. These are coordinate functions. Coordinate functions on Rm, because I is varying between 1 and m. So, there are some easy observations. The first observation is, number 1, f is continuous if and only if each of its component is continuous at a given point. F is continuous at a point, say A in Rn, if and only if each component fi is continuous. At A. Proof is easy. You just observe the following. Let me indicate how will you go about it. So, in order to prove it, I will consider f of a plus h. So, first of all, I will assume that each component is continuous. So, let each component is continuous at A. Then I will show that f is continuous at A. So, let us consider f of a plus something h. Okay. So, that by definition will be f1 of a plus h and so on, fm a plus h. Okay. So, I have to show it is continuous. So, consider the limit when h goes to 0. Okay, so this limit in the right side, it is equal to limit of this, and this limit will be equal to limit of the first, comma limit of the second, and so on. Lastly, limit of fm a plus h. Since we are assuming that all f1, f2, f3, fm, they are continuous, so they will be equal to f1a, f2a, fma, and this is precisely f of a. So, you have shown that limit of f of a plus h equal to f of a when h goes to 0. That proves that f is continuous. For the converse part, you can move from here. So, if f is continuous,
if f is continuous at A in Rn, then what will happen? Limit h tends to 0, f of A plus h will be equal to f of A. Okay. The left hand side will be equal to limit h tends to 0, f1 of A plus h, f2 of A plus h, limit h tends to 0, fm of A plus h. This is the left hand side. Okay. And you see the right side is f of A, means it is f1a, f2a, fma. Now these two vectors are equal. This shows that limit of fi A plus h is equal to fi A when h tends to 0 for all I between 1 and m. That shows that each fi is continuous. So continuity of f follows from the continuity of its component and the other way around. Now the same question can be raised for differentiability. If I ask the same question for differentiability, the answer is still yes. A function f from Rn to Rm is differentiable at a point A if and only if each of its component is differentiable at the point A. Now keep in mind the differentiability for function f is the Taylor series. So we write down the differentiability of f. So if f is differentiable means this will be the meaning all the time. F is differentiable at A in Rn if what happens? If f of A plus h is equal to f of A plus dfah plus some continuous function eta ah into modulus of h. dfah denotes the linear function which is called the differential of f at A, and it is defined as, we should keep the definition of dfa also in mind, this is f dash A into h. F dash A is a Jacobian matrix. So f dash A is the Jacobian matrix, means a matrix which consists of the partial derivatives of capital F. Yes, sir. dfa of h linear function. What can we say? This linear functional, because Rn is vector space and Rn. This is not linear functional. This is a linear function because f is a map. So let me recall, if f is a function from Rn to Rm, then what we have observed that at every point A, wherever it is differentiable, it will give rise to a linear map dfa from Rn to Rm again. Okay, so this is linear, and every linear map we know is written like this, operating on H. It's a matrix of this linear map multiplied by the vector H, and this product is the matrix multiplication of A and H. It is not a functional, it is a linear map. When you talk of functional, means the range space must be inside the field, Yes. but here it is not the field. Rm is not a field, right? Okay, it's just a vector space. ओके फंक्शन और फंक्शनल में यही फ़र्क है कि अगर आपकी रेंज स्पेस फील्ड के अंदर है
तो वो लीनियर मैप फंक्शनल कहलाएगा, और यहाँ पे अगर फील्ड के अलावा कोई स्पेस है और मैप लीनियर है तो खाली लीनियर मैप ही बोलेंगे उसको, ठीक है ना। Alright, so this is the definition to be kept in mind. Now I will be showing that each f is differentiable if and only if each of its component is differentiable. Let us look at the proof. Okay. So I will assume that first that each component of f is differentiable. So let me write down the component of f as f1, f2, f3, fm. So these are the components of f. Definition you already know. So suppose first each fi is differentiable. At A. A is a point in Rn. Okay. So what will happen? So this means for each I lying between 1 and m all the time, this Taylor series is available to me. Okay. For each I, fi a plus h will be given by fi a plus dfi at a operating on h plus some eta I at a operating on h multiplied by modulus of h. Is it right? So this is available to me for each component function fi. Now I am interested in finding the Taylor series for f. So for that I have to find out a linear function sitting over here, a continuous function at 0 sitting over here. While I write down this Taylor series, one should keep in mind that this is a linear map, okay, and this is a continuous function which are available to us. Okay. So now think of fa plus h. So consider f of a plus h. This is equal to, from the definition, this one, it will be equal to f1 of a plus h, f2 of a plus h, fm of a plus h. And now for the first component, this Taylor series is available to me because it is a differentiable function at a. So I will replace f1a plus h by the Taylor series f1a plus df1a h plus eta 1a h into modulus of h. The first component. Okay. Similarly for the second, the third, and the last one will be fma plus dfa m at h plus eta a m at h multiplied by modulus of h. Okay. All right. Now I will distribute it. So left hand side is f of a plus h. The right side, okay, so for each component you have 3 terms, okay. So I will write them down as f1a, f2a, fma plus df1a, sorry, h at a, like this, dfmah
plus the last fellow is modulus of h will be common from each of these terms. So, eta 1 ah, eta 2 ah, eta m a h, and the whole thing is multiplied by modulus of h. ओके अब इसका लुक कुछ टेलर सीरीज जैसा लग रहा है. तो पहला तो आसान है, दिस इज सिंपली एफ ऑफ ए. दूसरे टर्म पे आइए और गौर कीजिए कि यहाँ से आपको कोई लीनियर फंक्शन फ्रॉम आर एन टू आर एम मिल रहा है या नहीं. नाउ आई विल गिव यू अ फंक्शन, लेट मी कॉल इट टी ए एच. ओके, this is a function from Rn to Rm, and look how I define it. I define it like this: df1 ah, and last component is dfm ah. Will you tell me whether Ta is a linear map from Rn to Rm or not? इसको देखने के लिए कि ये लीनियर मैप वाकई में है या नहीं, आप चाहें तो इसको ऑर्डिनरीली चेक कर सकते हैं. यहाँ h को रिप्लेस करें h1 प्लस h2 से. चूँकि ये df1 df2 सब के सब लीनियर हैं, तो हर जगह ये h1 प्लस h2 हो जाएगा. उसको आप ब्रेक कर देंगे. होमोजीनिटी में आप h की जगह ah कर लीजिए, तो यहाँ ah हर जगह ah हो जाएगा. और चूँकि हर dfi लीनियर है, A will come out and it will come out from here also. So, it is easy to observe that Ta is linear. Okay. So, I will call this fellow as TAH, or rather instead of calling TAH, why don't you call it DFAH? You need a linear map, you better call it DFAH. So, you have got a linear map DFAH. Okay. And this I will call, it is a component of several functions. The only thing that you have to see is whether it is continuous or not. Continuity is the most important. So, we just have done that continuity also preserved in component wise, so it will hold. It will, but it will should be continuous specifically at 0. All of them are continuous at 0, so it will happen. Okay, let me call this last fellow, this one, as eta A h, and it is being multiplied by modulus of h. So, now see, so you have got a linear map, this is linear, no problem about it. Look at eta AH, look at eta AH. So, this is eta 1 AH, eta 2 AH, eta M AH. Okay, and its modulus will be modulus of this. Okay, ये एक वेक्टर है जिसके m कंपोनेंट्स हैं और इसका मॉडुलस विल बी लेस और इक्वल टू eta 1 ah प्लस eta 2 of h eta m h. Okay. So, now all of them tend towards 0 when h tends towards 0. So, in the limiting case, each one of them tends to 0, and therefore, the sum will also tends towards 0. Yes. Is it right? And therefore, it is continuous at 0. So, what follows from here, that the limit when h goes to 0, eta ah is equal to 0.
नहीं, एक वेक्टर है. ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ये होती है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज लेस और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी. इसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक वेक्टर है a1 a2 a3 a4. ठीक है ना. इसका मॉडुलस का मतलब अगर R3 में है तो ये वेक्टर है a1 a2 a3. इसका आपसे मैं अगर इसकी लेंथ निकलवाऊँ तो वो होगी, आप कुछ निकालेंगे अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर. ये जो क्वांटिटी है वो छोटी होगी a1 प्लस a2 प्लस a3 से. ये मतलब है कहने का. ओके. यस. अगर एक ट्रायंगल है उसकी दो साइड का सम लोगे तो वो बड़ा होगा तीसरी साइड से. दैट इज ट्रायंगुलर. सो everything is good about f of a plus h. So the Taylor series is satisfied, and therefore I will say yes, f is differentiable at a. So if each component is differentiable, f has to be differentiable. So this is what you have proved. Okay. Converse is not similar. Yeah, it's not similar. Converse, now you have to assume that f is differentiable. Now show that each of its component is differentiable. This is the proof of the converse is one line proof. Okay. So conversely, similarly, I was saying like we did in continuous case. We consider and then we use that is continuous and we use the no, that no this won't happen. No, it won't happen. Because here you have to make use of the Taylor series. There things were easy. Okay. Now you can conversely, if f is differentiable, then we have to show that each of its component is differentiable. Then we have to show that each fi is differentiable. Okay. So what I will do, what is fi? Fi, if you remember, is xi composition f. Okay. In the right side you have a composite function, and both coordinate functions are known to be differentiable. One can prove it. They are like projection maps. F you are assuming is differentiable, and composition of differentiable maps is differentiable by chain rule. So as xi, as each xi is differentiable, the right hand side of the above, the right hand side is differentiable by chain rule. That means fi is differentiable for each I, and you are done. So not only the result is true for continuous function, it is true for differentiable functions as well. Okay. All right. Let us see what else we have to do. Now next important thing is the partial derivatives. Because we can't say the same thing in continuity. If xi is continuous and f is continuous, then the continuity also holds true. Xi is continuous and f is continuous, then composition of two continuous functions is yes, that is also true. But for differentiability, you have to use chain rule. Without using chain rule, how you can't say it. Chain rule tells you that composition of differentiable map is differentiable, and their law of differentiation is
वो follow. That is the chain rule in fact. Okay. So Come. for continuity, we don't have any rule like it. No, no, वो that can straight away be verified. Sir, in converse part of the continuous can't be write directly in that manner because we did there because we did some more calculations. हाँ हाँ वही चीज़ बिल्कुल डायरेक्टली कर ऑफ टू फंक्शंस कंटीन्यूअस बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कंटिन्यूसली में यही यूज़ कर सकते हैं. बेसिकली मैंने वही किया है लेकिन उसको लिखा अलग है, उसको उसी में. यस ओके. नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग इज़, देखिए एक चीज़ हम कर रहे थे कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब तो आसान है, उसके डायरेक्शनल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव सब एग्जिस्ट करेंगे. बट द कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू. अगर फंक्शन डिफरेंट है possess डायरेक्शनल डेरिवेटिव और इवन पार्शियल डेरिवेटिव, then the function may not be even continuous. What to say of a differentiability? Okay, so अब ये सोचना पड़ता है कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गए, फंक्शन ज़रूरी नहीं है डिफरेंशिएबल हो, तो कैन वी इम्पोज सम कंडीशंस ऑन द पार्शियल डेरिवेटिव so that the existence of differentiability is ensured. Okay, और वो जो कंडीशन है वो है कंटिन्यूटी ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव. अगर सारे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और सब कंटिन्यूअस हैं, ठीक है, सारे पार्शियल डेरिवेटिव अप टू ऑर्डर 1 सब कंटिन्यूअस हैं, तब दैट विल इंश्योर the differentiability of capital F. Okay, so this is what I am going to prove. Okay, existence of this is a note. Existence of partial derivatives at a point, of course, at a point does not ensure does not exist the differentiability of the function. In fact, we have several counter examples. So one of the counter example is, for example, you can think of a function of two variable fx y. I can define as 1 if xy is not 0, equal to 0 and 0 otherwise. ठीक है, तो यानी कि आप या तो इसमें ना x 0 हो या y 0 हो, यानी जब कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग आए तो वैल्यू 1 हो. तो आप z = 1 हो गया. हाँ, अदरवाइज इट विल बी हाँ, अदर किसी और पाथ से आएगा तो ये प्लेन. फिर ये कंटिन्यूअस 0 पे नहीं होगा. ओके, सो दिस इज और भी हैं, देयर आर मेनी अदर एग्जाम्पल. सर जो अदरवाइज का केस है, दैट मींस इफ पॉइंट दैट z is 0 मींस बाकी हिस्सा जो बचा वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलावा जितना भी हिस्सा बचा वो अदरवाइज में आ गया. यहाँ पे वैल्यू 0, यहाँ वैल्यू 0, सब जगह वैल्यू 0, लेकिन जब कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग आप चलेंगे तो वैल्यू 1 है. ये all right, so in fact, so we expect not only this, so we expect some conditions on the partial derivative so that existence of differentiability is ensured. Yes. Okay, so that is nothing but the continuity of the partial derivative. So more precisely, we have the following theorem.
The statement of the theorem is, let me write down this theorem. If f is a function from Rn to Rn, if f is a function from Rn to Rm such that dj fix exists in some open subset of Rn containing a subset of Rn containing a such that containing a point A and dj fix is continuous at A. Okay, ये भी important है. Then f is differentiable at A. Then f is differentiable continuity important. Continuity is important. Okay. All right. So ये सिंबल सारे मेरे ख्याल से आपको सबको अंदाज़ा है. दिस इज़ द सिंबल फॉर द jth partial derivative of the component fi at x. x is arbitrary point. ठीक है. All right. So इसकी जगह आप ये नोटेशन भी यूज़ करते हैं del fi अपॉन del xj at a point x. तो दोनों ही नोटेशंस हम यूज़ कर रहे हैं. आई होप ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर. सो लेट अस स्टार्ट प्रूविंग दिस. क्या? हाँ, ये दे ऑल नो इट. देयर इज नो प्रॉब्लम. Okay, so for simplicity, what I will be doing is, so f is a function from Rn to Rn. So for simplicity, take m equal to 1. ठीक है ना. अगर m को 1 ले लें तो आपके लिए आसान हो जाएगा. और एक बार m को 1 के लिए हो गया तो फिर सब के लिए हो गया. इंडक्शन नहीं, कंपोनेंट वाइज. ठीक है ना. सो देयरफॉर आई विल डील विद दिस केस विच इज़ ईजियर टू डील विद. सो m अगर 1 हो तो f a प्लस h, हमें डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करना है? टेलर सीरीज के we have to find out a Taylor series for f of a plus h. So consider f of a plus h minus f of a. Okay. Now this I will write down as, चूँकि a पॉइंट है Rn का, तो ये लिखा जाएगा ऐसे, f of a1 plus h1 a2 plus something h2 f of a plus h लिख रहा हूँ, an hn minus f of a1 a2 an. Okay. Now this I will write down as, इसको ज़रा सा लिखना है. इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, f of a1 plus h1
A2, A3, AN, okay, minus f of A1, A2, 3, AN, or plus f of A1 plus H1, A2, H2 plus A2, A2 plus H2, and A3 as it is, everything else as it is, minus f of A1 plus H1, A2, A3, okay, plus f of A1 plus H1, A2 plus H2, A3 plus H3, A4, A5, AN, minus f of A1 plus H1, A2 plus H2, A3 up to AN. You understood the trick, okay? And similarly, you keep on writing. Here it will be f of A1 plus H1, A2 plus H2, AN minus 1 plus HN minus 1, and लास्ट वाले लिख दीजिए, लास्ट वाले, ओके, माइनस एफ ऑफ A1 प्लस H1, AN माइनस 1 प्लस HN माइनस 1, और दिस इज, ऐसे हमने लिख लिया. अब आप अगर देखेंगे तो आपके पास दिस माइनस दिस विल बी लेफ्ट, द रिमेनिंग टर्म, क्रॉस टर्म, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, और सब कैंसिल होते चले जाएंगे. सो यू विल बी लेफ्ट दिस माइनस दिस विच इज़ प्रिसाइजली द लेफ्ट हैंड साइड. अब आप करिए ये कि आप इनको देखिए ज़रा. लेट मी पुट अ ब्रैकेट्स. Okay, so अब you can see it that I can use mean value theorem, because for practically you are changing only one slot. Yes. So if I look at it as if it's a function of one variable, Yes. so I can use the mean value theorem. What mean value theorem says? Do you remember? Yes. Mean value theorem says that f of a in a plus h F of A plus H minus F A over is H is equal to F H. minus f of a equal to some f dash c Yes. into h, H. Where C belongs to the interval of. where c belongs to the interval of size h. Is it right? Yes. So it is a interior point of that interval. Yes. So I will use the mean value theorem. So for the first term, if I write down over here, for the first term I will be writing, this is, अब यहाँ चूँकि partial derivative use करने हैं मुझे, तो this is d1 f1 of f of some middle point को क्या ले लें, कुछ C1 C12 चूँकि n डायमेंशन का है, ऐसे करके लिख लें. ठीक है. और जो दूसरा ब्रैकेट है वहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ भी फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, मल्टीप्लाइड बाय h1. ठीक है.
सर इसमें लेकिन सेकंड टर्म से चेंज तो a2 plus h2 to a2 तो सर इसका अब इसका इंटीरियर पॉइंट ले लेंगे। जैसे इसके ऊपर वाले में जो भी किया है वहाँ पे तो a2 plus h2 में चेंज हुआ है सर, a2 plus h2 minus a2। नहीं ये फर्स्ट ये है ना, सर वो नहीं आई एम सॉरी, नहीं ये वो ये है, यस सर आई एम सॉरी, आई मस्ट राइट डाउन हेयर, यस फर्स्ट टर्म इज दिस वन, यस सो d1 ऑफ f of c1 द फर्स्ट टर्म। ओके, तो इस यहाँ ब्रैकेट नहीं बनाया था, इस वजह से ये कन्फ्यूजन हुआ। अब दूसरे ब्रैकेट में आप आइए, तो ये हो जाएगा आपका d1 ऑफ f ऑफ, अब मिडिल पॉइंट उनका होगा कुछ, तो वो मिडिल पॉइंट को हम लिखेंगे c2, उन्हें मैंने कुछ हाँ ठीक है, इसको यहाँ 2 कर दीजिए, ये 1 c2 2, ये सब 2 है, ये n है, और ये h2 है, एंड सो ऑन। और ये लास्ट वन लिख लेते हैं, d1 ऑफ f, और यहाँ हो जाएगा नीचे m, नीचे m नहीं n सॉरी, 1 c2n cn h n। इसको समेशन फॉर्म में लिखें तो ज़्यादा सही रहेगा। सो अगर मैं इसको मिटा दूँ, या चलिए वो रहना चाहिए सामने, तो ये हो गया हमारा समेशन, आई एम राइटिंग फ्रॉम हेयर टू, यस, दिस इज इक्वल टू समेशन j इक्वल टू 1 to n d1 f। इस एक्चुअली ये मैं ये d2 है, d2, अब सेकंड स्लॉट में डेरिवेटिव ये dn, ठीक है, यस दैट विल बी dj, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे हो रहा है डिफ्रेंसिएशन, या सेकंड में, यस यस यस, ऑटोमेटिकली dj ऑफ f। अब वो आ गया आपका cj 1 cj 2, okay now I will rewrite it as summation, ये ऑलरेडी हो गया इसको, ओके, सो इसको तो मैं वैसे ही लिखूँगा, और बस मुझे एक कंटिन्यूस फंक्शन की तलाश है, दैट आई विल ट्राई टू फाइंड आउट। इसको करेंगे हम, इसको यहाँ अपनी तरफ से a कर लेंगे, और जो डिफरेंस होगा वो माइनस कर देंगे, ओके, h भी था, h और प्लस, अब इसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे इस टर्म को, तो ये हो जाएगा हमारे पास dj f, अब इसको cj में लिख लेता हूँ, 1 2 छोड़िए, ठीक है ना, और समेशन भी है माइनस, ये निकाल दीजिए dj f a, ठीक है ना। अब ये चीज़ यही इनके बराबर आ गई, ये यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गया, इंटू एच जे, मॉड एच भी चाहिए तो मॉड एच यहाँ लगा दीजिए, और यहाँ से मॉड एच से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। नाउ दिस इज़ ए लीनियर मैप, पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, एच जे के फंक्शन है, सो दिस इज़ ए लीनियर मैप, दिस इज़ लीनियर, एंड बिकॉज ये कंटिन्यूस फंक्शंस हैं, ये हमने अज्यूम कर लिया है, तो डिफरेंस इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन,
और जब ये सी जे ए से कोइंसाइड करे